Good evening. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Reva Param Brahma, Tasmai Sri Guruve Namaha. Ragadirogan, Satatan Suktan, Asheshakaya Pasitan Asheshan, Rosakya Moharatidang Jaghana, Yo Purva Buddhya Nasatasmai. Heartiest greetings to all on this auspicious fifth day of the 7-day national workshop on Ayurveda Science in India Knowledge System. I extend my heartfelt greetings and congratulations to our distinguished speaker, Dr. Shweta Madam Panda Sir, Guruji, along with all faculty members, research scholars, and dear participants who have joined us today. Now, I would like to warmly invite our respected principal, sir, Dr. Subham Supan, principal of Kulti College, Kulti, Asansol, Bengal, to kindly deliver a few words about the fifth day of the workshop. Sir. Good evening, everyone. Ayurveda Science in Indian Knowledge System, the workshop organized by the Department of Sanskrit, now reached in its fifth day. In the previous fourth day, we have already learned about the scope of the Ayurvedic science, its historical background, its psychology, and some Ayurveda Vedacharya in last 4 lectures. Today, on Ayurvedic discipline and technical knowledge, the lecture will be delivered by Dr. Shweta Kulkarni Madam on behalf of Kulti College and Department of Sanskrit. I welcome Shweta Madam, and we also have two memorable and distinguished teachers with us, Dr. Devbrata Panda sir and Dharan sir. I again welcome you, sir, and all the delegates represent here, all the participants from various colleges and universities, all from all over India. I welcome everyone in this 7-day workshop on Ayurveda science and in Indian knowledge system. Through this lecture, we are trying to organize the concept, the behavioral aspect, and everyday life importance of Ayurveda science in everyday life. I again welcome Shweta Madam in today's program and welcome all other respected dignitaries. Over to Shubhankar. Thank you, sir. Thank you. We are deeply honored to among us today our distinguished speaker, Dr. Shweta Kulkarni Madam, Professor and Head Department of Dravya Guna Vigyan, Mahaganapati, Ayurvedic Medical College and Research Center, Karnataka. She has renowned scholar in the field of Ayurveda. She has published many articles, many books, and she also received many awards. Now, I warmly invite respected Madam to kindly deliver her valuable address. Madam. Hari Om, Gurubhyo Namaha. Am I audible, sir? Yes, Yes, ma'am. yes, madam.
Yes, ma'am. Can you present the PPTs whatever I sent so that Yes, ma'am. Just 1 minute. yeah, thank you. You can make it full screen. Shubhankar sir, Yes, ma'am. if I say change the slide, is that okay for you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, thank you, sir. So, with the blessings of Guru, today's session we are starting. So, good evening, everyone. Respected dignitaries on the dais, respected Dr. Subhranshu Pan sir, Principal of Kulti College, respected Dr. Shubhankar, the convener of Kulti College, esteemed faculty members, my dear audience. I feel immensely glad and honored to be present in this prestigious platform of 7 days national workshop on Ayurveda science in Indian knowledge system. Today I have been given the opportunity to speak the topic Ayurvedic disciplinary and technical knowledge. I'm truly grateful and obliged for this opportunity to share my thoughts. So with your kind permission, sir, I would like to begin my session. So before understanding this, disciplinary, let's know what's our body and how it should be nourished. Sir, can you change the slide? Next slide. Next slide, sir. Shubhankar, sir. Yes, ma'am. This one, ma'am? It is not visible. As all the slides are having shlokas, so I want that everyone should go through, like our knowledge is not like Ayurveda means just go with the some herbal medicines. It is a lifestyle. Our acharyas were so intelligent. They know that we people being in a human, laziness is a one part of our quality. So they introduced the Ayurveda in our lifestyle. So just if you can present next slide. Sorry to interrupt, Dr. Shubhankar. Could you please, make it 100% visible on the screen? It's This is present in a 100%. little window. Sir, it is 100%, sir. Yeah. Notes come, sir. No, sir. शुभंकर पहले उसको See, full it's screen just reciting. Yeah, full screen. Yeah. Can you make it full screen, please? It is possible. Take your time. Okay, sir. Actually, electronics. That's okay. okay No, not this. Not this. Go next. Go next. Aim of Ayurveda is third one. You go with the second one. second slide Yes. This one, the second. Go little up. Sir, there will. Yeah. Next. Previous slide. Ma'am, this light? No, sir. No, sir. You go first slide, sir. Yes, ma'am. this is the fourth one I start from think. sir? the beginning. Go to the second Shubhankar. slide Pardon, sir? this is the fourth slide I think so you go to the second slide This is a third. This is a fourth slide. So you Oh, go yeah. for a second slide. yes Ma'am, it is a first, and next is a what is the Sharira? It is a No, sir. This is not the first slide. ma'am. It is a first one. Slide. And first slide what is ahara likha hai Shubhankar ऊपर what is Sharira is a
Otherwise, Sir, ma'am, full sir, screen, ma'am. allow me to share the slides, sir. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. You can share, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. You can share, ma'am. Wait a minute, sir. I shall. बड़ी मुश्किल से जुड़ पाए हैं, रुको अभी। Yeah, 1 second, sir. I'm just sharing my window. Yeah. Yes, now can, Yes, ma'am. so, Ma'am, can you make it full screen, please? pardon, sir? Full screen. Could you ma'am. make it full screen? Yes, sir. I can. Thank you. Thank you. Is it visible? Ma'am, it is. Ma'am, please share your screen, ma'am. नहीं मैम स्क्रीन शेयर नहीं आएगा No, you start the screen sharing. Subhankar, sir. Yes, ma'am. You only share, sir. I have some issues with my windows. Okay, ma'am. So, extremely sorry, audience. Sir, please, you can share if you can. Yeah. Visible it's. No. শুভঙ্কর পুরোটা ক্লোজ করে একদম প্রথম থেকে আবার শুরু করো। হ্যাঁ ভিজিবল হচ্ছে, ফার্স্ট পেজে এসছে। এবার তুমি এটাকে ফুল স্ক্রিন করো। Full screen, sir. Sir, এটা full হ্যাঁ। screen আছে, sir. না ফুল স্ক্রিন নেই, ওটা উপরে গিয়ে There উপরে will দেখো be, icon will be there. Make it a full screen. হ্যাঁ উপরে স্লাইড শো ভিউ শো করো। স্লাইড শো উপরে যেটা স্লাইড শো রয়েছে উপরে যাও, উপরে স্লাইড শো থেকে ভিউ শোতে ক্লিক করো। Next one. হ্যাঁ এটা ফার্স্ট পেজে এসছে, এবার সেকেন্ড পেজটা করো। তুমি নেক্সট করে যাও। ফার্স্ট পেজটাতেই আছে। হ্যাঁ তোমার কি নেক্সট পেজ হচ্ছে না? নেক্সট করো, এন্টার করো। স্যার এখানে হচ্ছে কিন্তু স্যার। না You কিন্তু can দেখা click, যাচ্ছে না। sir, there are vertical slides are there, no? You can click on the second slide. It will হ্যাঁ come. বাঁদিকে যে স্লাইড গুলো আছে না ছোট ছোট, ওইগুলোর সেকেন্ড স্লাইডে ক্লিক করো, ডাবল ক্লিক করো সেকেন্ড স্লাইড। Yes, হ্যাঁ। yes. হ্যাঁ That এইরকম is- ভাবে। হ্যাঁ ওকে ম্যাডাম কন্টিনিউ। Shall I start, sir? Yes, ইয়েস ma'am. ইয়েস ম্যাম। यस So before understanding the disciplinary, let's know what is our body and how it should be nourished. So first we will come to understand that what is Sharira. So the Sharira is Kshiyate Anena iti Shariram. Sushruta Samhita Sharirasthana, first chapter, it is the 15th shloka, and it tells that which undergoes continuous decay, degeneration, or wear and tear, it is called as a Sharira. So it means that a day routine we are doing our work. We are every day we are going with the mental work, we are going with the physical work, and every tissue of our body is going under the process. So every day our body is going under one or other decay, degeneration, or our cells are getting dead and new cells are formed. So this every day which is going under decay or degeneration, that particular Dravya is, or that particular thing is called as a Sharira. So with what it is made up of? So the next shloka tells that Pancha Mahabhutatmakam hi Shariram. It is told in Charaka Samhita by Charakacharya. In Sharirasthana, first chapter, it is a 27th shloka. And they tell that the whole body is made up of Pancha Mahabhutas. So what is Pancha Mahabhutas? So whatever, Akasha, Vayu, Prithvi, Agni, Aap,
these all factors which make a universe, those are called as the Panchamahabhutas. The theory of Panchamahabhuta formation is very beautiful. So with that Panchamahabhutas, our Sharira is made. Slide change, please. Third slide. Yes, thank you, sir. So, here again, not only our body is made up of Panchamahabhutas, but even every Dravya which is present in the universe is made up of Panchamahabhuta. So, Charakacharya, who told in a Sutrasthana, 26th chapter, 10th shloka, they tell that Iha khalo dravyam panchabhautikatvam. So, whole universe, every Dravya is made up of Panchamahabhuta. The whole world is made up of Panchamahabhuta. Whatever present in this universe in the form of Dravya is called as a Dravya, and it is made up of Panchamahabhuta. Sharira is also made up of Panchamahabhuta. So as per the law, struggle for existence, we have to fulfill. As I told you earlier that Shiryante anena iti shariram or kshiyate anena iti shariram. So every day our cells are getting degenerated. So regeneration is needed, and our energy, every time our energy is utilized. So once the energy is utilized, we became tired. So refilling, fulfilling the replenishment of energy, not only the energy but the cells, that is needed. So that is, our existence matters when we fulfill our energy and our body with the health. So if we want to exist on the earth with good health and prosperity, this replenishment or this fulfillment of energy and the cells or our existence is needed. Then we need to supply the nutrition, whatever day by day we are lacking for our day routine work. So the definition of Sharira is Kshiyate anena iti shariram. The first slide what we studied. Every day which is becoming kshina or reduce, that particular thing is called as a sharira. That kshinatva can be replaced by the what they called as this Panchamahabhuta. As body is Panchamahabhuta pradhana, and the what that called as a whole universe is what that called as a Panchamahabhuta. So samana what that called as a samana prakriti samasamaveta, or we call it as yes. So in that concept, Panchamahabhuta nourishes Panchamahabhuta. So wherever there is a reduction in our body, we have to fulfill with Panchamahabhuta. Every day our cells are dying. So for existence of new cell, we should be formed, and the lost energy should be fulfilled and regained. So how it is regained? One. So this lacuna is fulfilled, and this goal of fulfillment reached by the following of Ayurveda concept, which has the aim. Please change the slide. The next slide. Yes, the fourth slide. So the aim of Ayurveda is swastasya swastarakshanam aturasya vikara prashamanam. So it is not like Ayurveda means only treating the diseases. But our Acharya tells that if we are healthy, then no need of going for the diseases. So in Samhitas, we can go with the Charaka Samhita, we can go with the Shushruta Samhita or Ashtanga Rudaya, or any Samhita we take. Our Acharya tells that first our aim and intention is to stay healthy. And for staying healthy, our Acharyas explained Dinacharya, Rutucharya and concepts to be how to be a healthy. What happens is, though we try to stay healthy, but definitely with one or other cause, if we fail to stay healthy, then we became atura or diseased. So then our Acharya tells that swastasya swastarakshanam. First we have to protect our health. If we
fail to protect our health, then the diseases occurs, and then we have to do aturasya vikara prashamanam. When someone becomes diseased, then we have to cure that disease. So this is the main aim of Ayurveda. So let's know more about this. Next slide. Next slide. Yes. So how we can go through this all? Like, yes, Ayurveda is there, and Ayurveda is like a ocean. So studying a whole Ayurveda in a stretch, it is a bit difficult. We have to spend what they call as life. Then also, if we are gaining little bit from that samhitas, then we are blessed. So it is like for conveniency. Actually, the samhitas are together, but for our conveniency, the Ayurveda is divided into 8 branches, and we call it as Ashtanga Ayurveda. So Ashtanga Ayurveda, and those are, first is Kaya, that is Kaya Chikitsa. There we call it as internal medicines, where the treatment is given in the form of Dravyas. Then next comes is a Bala. It is called as a Kaumara Bhrutya or pediatrics, where exclusively for children the treatment is prescribed. Then even the maternal health is discussed. Then comes is a Graha Chikitsa. Graha Chikitsa, usually people when think about the Graha Chikitsa, then they think that something what they called as thinking about the grahas or thinking about the bhavisha and all those things. But Graha Chikitsa is completely about the psychiatry. It is a Bhuta Vidya. So psychological and spiritual disorders discussed here. Next comes is a Urdhvanga, that is Urdhvanga Chikitsa or Shalakya Tantra. So here, ear, nose and throat, including eyes, are the diseases of that, and it's what they call as a treatment is discussed and explained. Next comes is Shalya. Shalya means Shalya Tantra. Am I fast? No, Am no, I fa- No, no, it is correct. No, Pandit. Okay. Next comes is a Shalya Tantra. Shalya, it is which is foreign body is called as a Shalya. So wherever the foreign body is removed, or wherever there is a surgery adopted, that particular branch is called as a Shalya Tantra branch. Then comes is a Damshtra. Damshtra is what they called as a, whenever there is a sting, then that is called as a Damshtra. So it is a symbolic, but comes is a Agada Tantra. So wherever there is a toxicology, the study of a poison and their treatment. So not only the study of poisons like organic poisons or the animal bite poisons, no, even the food poison, the whatever diet we take, that poison also discussed in this branch. Next, the 7th branch of Ayurveda is a Jara Chikitsa. Jara means the what they called as a age, the old age. So here in this branch, the rejuvenation or Rasayana Karma or geriatrics is discussed. The 8th branch of Ayurveda is Vrusha Chikitsa. The Chikitsa where the healthy and the qualitative progeny or aphrodisiac therapy or good reproductive health and its treatments are discussed. That is called as a Vrusha Chikitsa, and another way it is called as a Vajikarana Chikitsa. These branches explain detail about different diseases and of the different part of our body and its treatment. Change the slide. Yes. So now comes is why when these 8 branches are discussed. So see, whenever we study or whenever we are discussing like disciplines, so before discussing the disciplines, we should know that in what way these disciplines are explained. So
in that, first we have to understand that our body, the fundamental of our body is dosha, dhatu, mala, moolam hi shariram, which is explained by Shushacharya in his Sutrasthana 15th chapter, 3rd shloka. Here the Acharya explains that the main fundamental of human body is dosha. The three doshas, vata, pitta and kapha. So vata, what they called as vata, which regulates the body, whatever the movements, not only the outer movements what we see, but inside our body, any movement, even in a cellular level, even in from the one cell to another cell, a smallest movement of the body is maintained by vata. Then comes is a pitta. So pitta dosha maintains the metabolism. Wherever there is a ushma, wherever there is a digestion not only at the level of pachana samsthana of our food, but the digestion at the level of cellular. When 13 agnis are there. So these agnis, when taking care of our what they call as a digestion at every level. So first comes is a Jaఠaragni, then comes is a Panchabhutagni, then comes is a Dhatvagni. So wherever there is a Pachana karma, wherever there is a metabolism, there Pitta takes a role. And Kapha. So what is the meaning of Kapha? Wherever there is a need of nourishment, wherever there is a need of sthairya, wherever there is a need of stability, there the kapha dosha works. So this vata, pitta, kapha, they take their own role, responsibility, and our body is in proper, what they called as a healthy status. So whom they are nourishing? Those are dhatus. So second point, or a second fundamental part of our body is dhatu. So with what we are made up of? So there are 7 dhatus: rasa, rakta, mamsa, asthi, majja, shukra. There are 7 dhatus. We will discuss later. So these dhatus which hold our body, with these 7 dhatus, we make our existence, the physical existence. And with the regulation of these 3 doshas, these 7 dhatus are become stable, and malas, the waste product of our bodies, are excreted out. Okay, so with these three fundamental units, our body becomes completely what they call as a formed, where mana is involved. With the Atma, we are called as live. But when it comes to the physical, then these dosha dhatu mala moolam hi shariram. Then if we maintain the homeostasis of these 3 above factors, then we are called as healthy. So here word homeostasis is very important. Next slide. Yes, thank you. Yeah. So how samadosha, sama agnischa, samadhatu, mala kriyaha. So here this phrase tells that, this phrase tells that if we maintain samadosha, sama agni, and with the help of this sama agni and samadosha, our dhatu are at the equilibrium and malas are excreted out, then we are called as healthy. So these are the concepts our acharyas try to explain, that when you maintain samadosha, sama agni, agni plays a very important role. It may be Jaఠaragni or any other agni. Especially first role is come with the Jaఠaragni, for which we tell if 1 o'clock is our food time and we skip that, then rumbling sound comes from our stomach. So that agni plays a very vital role, as if our digestion is not proper, then the first formed dhatu, you know, the formation of dhatu is a very beautiful sequence. Can you go for the next slide?
Yes. So here our sharira is made up of dosha, dhatu, and mala. So doshas already we just go with the introduction as a vata, pitta, kapha. Each dosha is of 5 types. Okay. Then dhatu. So when we have a food, right? Whatever we have, so our acharyas tells that whenever we are having a food, we should not talk. We always think of a good about the food, or we should not have any negative thoughts in our mind when we are having a food. Or a very common sentence told by our elders that with what mood you have a food, the food will convert into that. It means that your psychological impact actually plays a role in a digestion. Your Agni will be acting according to your psychological level. If your anxiety is there, if you are angry, then whatever you eat, as you are eating very fast, so digestion process will not occur. And scientifically, if we are going, then prolactin level increases, and the whatever the hormones is needed, those are get disturbed, and due to that the vasovagal reflex, which the nerve which is responsible for secreting the HCl, which is responsible for digestion, okay, that is not getting secreted, and we will whatever we eat is not getting digested properly. So that is the thing. So point is, if we eat a good food with a good mood, or with a happy what they called as a feeling, with all positive attitude, then that food is converted, properly digested, and converted into first dhatu, that is called as rasa dhatu. And this first dhatu, that is called as a rasa dhatu, and on this rasa dhatu is again divided onto prasada amsha and main rasa dhatu. So prasada amsha, on that prasada amsha, rakta dhatvagni will take a role, and the second dhatu is formed. So like this, one next dhatu is getting formed. So the rasa dhatu, if it is formed good, then rakta dhatu will form good. And next mamsa dhatu, then meda, then asthi, then majja, and then shukra. So the whole sara of dhatu is present in shukra, and then it is converted into ojas. So the whatever ahara we consume, that is plays a very important role. So that is a first step of our nourishment. Then comes is a mala. Mala, we call it as a waste product, and that is isha, mutra, and sweda. So actually we call it as a waste because we don't need for our body. Our body is a very clever. It won't take what is not needed. It takes how much it is needed, and remaining everything it throw out. So whatever the purisha, mutra, or sweda is there, definitely it is not needed for our body, and whatever the what is called as the harmful products, or in a chemical reaction which is going in our body, those are formed, will go through this purisha, mutra, and sweda. So these are the 3 content through which our body is becoming pure, or devoid of what they called as a toxic substances. So this concept is explained in the Sushruta Samhita. Next slide. Next slide. So let's go with the Vata. Vata dosha. Vata dosha is composed of Vayu and Akasha Mahabhuta. So as early we discussed, the whole universe is made up of Pancha Mahabhuta, and even our body is made up of Pancha Mahabhuta. So how? Like this. Vata dosha is made up of Vayu Mahabhuta and Akasha Mahabhuta. So the function of this Vata dosha is movements, as I told earlier, and nervous system control. So so its main functions are respiration, circulation, and excretion. Definitely the movements. Then comes is a types of Vata.
Pranavata, Udanavata, Vyanavata, Pranavata, Udanavata, Vyanavata, Samanavata, and Apanavata. So these what that 5 vatas plays an important role in its own places. Like Prano Urahastita, Udano Urahastitaha. So Apana, the Kati area. So like this, every vata is having its own place, and then they are circulating throughout the body, its own sthana. Then comes is a Pitta dosha. Pitta dosha is composed of Agni Mahabhuta and Jala Mahabhuta. So the function of Pitta dosha is digestion, metabolism, body temperature, our vision, whatever we see, and our intellect, whatever intellectual power is there, that is due to Pitta dosha. This Pitta dosha is again of 5 types: Pachaka Pitta, Ranjaka Pitta, Sadhaka Pitta, Alochaka Pitta, and Bhrajaka Pitta. So the Pachaka Pitta is in what that called as its sthana is in a stomach. Then Ranjaka Pitta is wherever there is a color. Sadhaka Pitta is in the skin. Then Alochaka Pitta is in the Bhrajaka Pitta is in the eyes. So next is a Kapha dosha. Kapha dosha is composed of Jala and Prithvi Mahabhuta. Both are having what that called as a Guruta. So the function of a Kapha dosha is stability and structure. Wherever we need a sthiryata, it is a physical or psychological, that is done by the Kapha dosha. And the structure, lubrication, wherever we need a lubrication, there, wherever we need a smooth movement in the body, there this Kapha dosha plays important role. And our immunity and strength, whatever is our immunity, you know, the nowadays we are going through the lot of what that called as a diseases, like a corona is there, or leave about corona, a simple flu. If we don't have immunity, then it is very tough to tackle with the external viruses. It may be bacteria. We become sick easily. But if we have a good diet, and if we have a proper Kapha dosha, then immunity and strength, the willpower and our physical strength is maintained by Kapha dosha. So this Kapha dosha are 5 types: Kledaka Kapha, Avalambaka Kapha, Bodhaka Kapha, Tarpaka Kapha, and Sleshmaka Kapha. So these are 5 types of kapha present in different parts of the body, and they play their role. So next comes our dhatus, or tissues of our body. If we go correlation with the modern science, there are 7 dhatus. Rasa, in modern we can call it as a plasma or a nutrition. Then comes is a rakta dhatu, that is we can call it as a blood. Then comes is a mamsa dhatu, that is called as a muscles, or whatever we the tissues, whatever externally our framework, our bony framework is filled, that is called as a mamsa. Then comes is a meda. Meda is a fat. Then comes is a asthi, that is bone, the main framework. Without asthi we are just a bolus. Then comes is a majja. Modern people correlate with the bone marrow. And then comes is a shukra. Shukra, the reproductive what they called as a tissue, and these are the 7 dhatus of the body. So what is the function of these dhatus? They provide structure, nourishment, and support to the body. Then comes is a mala. There are 3 main malas: purisha, that is feces; mutra, urine; and sweda, that is a sweat. What is the function of these 3? That is the elimination of a waste and maintenance of the balance. So whatever the toxic substances, whenever our body is continuously working, it is a machine. So whenever it is working, the chemical
reactions are going into the body. So whenever there are the chemical reactions happening, so definitely one or other waste product or toxic substances are released. So those toxic substances are filtered, and they come out of the body with the purisha, mutra, or sweda. So this is the whole summary of the above three dosha, mala and dhatu. Is the body is governed by three doshas, supported by 7 dhatus, and maintained by 3 malas. And this can be achieved. The what that called as the samadosha, sama agni, and this can be maintained or must be maintained when we follow the dinacharya and rutucharya. So the role of dinacharya and rutucharya plays a very important role in our healthy lifestyle. Next slide. So before understanding dinacharya and rutucharya, we should know that why we have to follow the dinacharya and rutucharya. So why the diseases comes? So Sitoshna Varshanam Parivartanam Akalajam Asatmendiyartha Sayoga Pradnyaparadhascha Karanam. It is told by the Charakacharya in Sutrasthana, first chapter, 54th and 55th shloka. So they told that Shita or Ushna. So when we have a 6 Rutus, Varsha, Sharada, Hemanta, Shishira, Vasanta, Grishma. So these during these Rutus, our temperature, there is a change in the temperature. It may be Shita, it may be Ushna. So Kala changes. So due to what they call as a Indriyartha Asanyoga or Asatmendriyartha Sayoga and Akalaja. So we do Pradnyaparad. So these are the reasons that Parivartanam, Akalajam, Asatmendriyartha Sayoga or Pradnyaparada. Knowingly we do the things. Like different seasons are there. Varsha Rutu is there. Grishma Rutu is there. We eat the Ushna Dravyas. So definitely Pitta Prakopa will be there. So these are the reasons why diseases forms. So if we know Dinacharya and Rutucharya, Dinacharya, the day routine, and Rutucharya, every Rutu, if we follow the proper rules and regulations, like particular Rutu, particular dosha changes will be there. Definitely Panchamahabhutika, what that called as a changes happen in universe. Even when the water comes from the sky, until and unless it is not touching the soil, it is just a Divya Jala. But as soon as it touches the soil, then it becomes the Jala for that particular soil quality. So this Divya Jala receives the qualities of a soil. So definitely whatever the soil quality is there, that water we drink. So due to that, as a Rutu changes, the Panchamahabhutika Sangatana definitely changes, and the quality of even the water changes. So not only the water, but whatever the whatever the food content we eat, that also we have to change. If we maintain the same diet, or if we maintain the same what they called as a food habit, then definitely we cannot match with the Rutu and we become diseased. So that is the reason why we have to follow not only Dinacharya, we have to follow, must is Rutucharya also. So Acharyas explain very beautifully before starting the what they called as a chapter of diseases. So to maintain the health of the healthy person, our Acharyas explain first is a Dinacharya, a day routine, and then they explain a Rutucharya. So it is the people, or whenever we tell just they think like, oh, this is very tough to maintain. But if we just go and follow these Rutucharyas and they become routine of our life, then we maintain our health. That is the prime important, as we are whatever now being in a human, we are doing just to maintain our healthy status of our body. If our body is not in a healthy status, then whatever we do, it is not compatible, or we can't follow the things. So Dinacharya is explained in
Dinacharya explained in Ashtanga Hridaya Sutrasthana chapter 2 and Charaka Samhita Sutrasthana chapter 5. And in a Dinacharya, Acharya explained the first quote he tells that by Vagbhata is Brahme Muhurte Uttishtate Swastho Rakshartham Ayushaha. If you want a good health, or if you want to protect your Ayush, then you have to get up in Brahma Muhurta. So this is the first quote that Ashtanga Hridayakara or Vagbhatacharya tells. So this with the Brahma Muhurta, the Dinacharya start. So I just try to tell some points of Dinacharya, like waking up early, then oral hygiene. Like in the oral hygiene, Acharya tells that first, as soon as you woke up, then you have to, whatever your urges are there, you have to empty it. It may be urine, it may be what they call as a stool. You have to go to toilet and empty your what they call as urges. Mala Visarjana is you have to do, then go for oral hygiene. Even Acharyas tell in a Dinacharya that how to maintain a oral hygiene. Danta Dhavana, Kavala, how to even our Acharyas explain that what are the twigs, what are the plant that we have to use for Danta Dhavana. Then they tells that go for a Abhyanga, then go for a Vyayama, then Snana, then proper diet, and like this, so on. Even after the food, our Acharya explains that Tambula Sevana. Nowadays, people tell that there are a myth or a wrong concept about the Tambula Sevana. People think that Tambula Sevana is a bad habit. No, actually, Tambula Sevana or eating pan, if you don't make a regular what they call as a with this tambaku or all, if you are eating, then it is called as a bad habit. But if you are eating the tambula immediately after your food consumption, a heavy food consumption, then tambula is helping for the digestion. As now our diet is very light, like chapati, curry, dal or rice. But our Indian platter is full-fledged, like salt, next to salt there is a lime, next to lime there is a pickle, then a dry curry, then a wet curry. Then if any other curries are there, then come down, one side is a sweet, next is a rice, on the rice there will be a ghee, then there will be a dal, then last we are ending with the buttermilk. If non-vegetarians actually are there, then their diet is different. I am extremely sorry, but I'm a pure vegetarian, so just my platter I am explaining. But the basic platter is this. So when we are having this much of platter, then we are getting a whole nourishment of a carbohydrate, of a protein, of what they called as a minerals, of a micronutrients and macronutrients. So when whole this content are going inside our body, then definitely we need something to digest that. So this Tambula Sevana plays a very important role. So our Acharyas beautifully explained the Dinacharya. Next slide. Okay. So next slide is Tasmat Utanam Parivartanam Yatha Satmyam Samacharet. So here they explain about the Rutucharya. So one should adapt the lifestyle and a diet according to seasonal changes. As I told earlier, if we adopt our lifestyle according to seasonal changes, like a rainy season, our Agni is very poor. Then eat a light food like a khichdi. But if we go to Sharad Rutu or a winter, then our Agni is in a peak. So what? Our Acharyas in the beginning I told, they were so clever that they know that if we don't do this, then our whatever the public or whatever the people who are there in our country, they might do not follow simply Ayurveda. So they introduced Ayurveda in our day routine life.
So just imagine, whenever there is a winter, we eat the things, we eat the food which is made up of oil, which is made up of full of proteins, fat. Like we हम तला हुआ खाते हैं, जो घी से बना होता है, जो बहुत हेवी होता है, ताकि हमारा जो अग्नि है उसको हम शांत कर सके। और जो कि उस टाइम पे हमारा अग्नि पीक पे होता है, ठंडे सीजन में, तो we get a good nutrition, we can digest and we get a good nutrition, so our kapha dosha will be in a peak, so we get a good immunity. Not only that, but whatever the festivals we celebrate, like in a Chaitra Masa, we eat tikta rasa, like the flower of neem with the jaggery we eat. So because their pitta prakopa is there, so we want to do the shamana of pitta prakopa. So to subside pitta, our acharya want everyone to eat the tikta rasa. Tikta means bitter. But if we tell everyone to eat bitter, no one will do that. So our acharyas introduced this, what that called is a beautiful concept in the form of what that called as a ritual. So from the Chaitra Masa, first day, everyone try to eat the, what they call as a flower of neem with the jaggery. It is not of a one day, but they tell that at least 1 month we have to follow this empty stomach. And the kacham, the things made up of what they call as kairi or kacham. So our science or whatever we are studying, we tell Ayurveda, but whatever our Ayurveda acharyas, Charakacharya, Shushrutacharya, and the acharyas, there are n number of acharyas who try to explain the concepts what we follow. So we are blessed with all these thought processes. So Rutucharya explained in Charaka Samhita, Sutrasthana chapter 6, and Ashtanga Hridaya Sutrasthana chapter 3. It explains the seasonal variation in doshas, changes in a diet and a lifestyle. So if we go to the Charaka Samhita Sutrasthana chapter 6, every Rutu and what happens in that Rutu, what happens with the dosha, what happens in an environment, what will be the quality of a water, what will be the plants, what will be the quality of a soil, how we have to take a diet in a particular season, what should be our lifestyle. Even our acharyas explain that how to take care of our sleep, whether we should do the exercise or we should not do the exercise, how to even wear the clothes. Should we wear a mani? Should we go for a flower, wearing a flower? Which type of flower we should wear in a particular reason? Even that level our acharyas explained in this Rutucharya. Even acharyas, when they are explaining a particular Rutu, they explain about in that particular Rutu possible diseases may be there and how to prevent that seasonal Rutus. So Dinacharya maintains a daily balance while Rutucharya ensure the seasonal adaptation. Both are essential for our Swasthya Rakshana as explained in the classical text. Slide change. So here I am coming with the conclusion of today's session, as I am very, what they called as a small in front of the, what they called as these samhitas. I am just trying to justify that whatever the culture, whatever the tradition, being an Indian we have is a beautiful and awesome. So with this culture, this tradition, the Ayurveda, even if we follow this, already we are blessed with the psychological strength. We are most intelligent in what they call as a, why? Because we are in our genetics, we have this culture, we have this tradition. If we follow Dinacharya, if we follow Rutucharya, if we understand that what is our body made up of, how the things in the universe are going, so that make not only our responsibility not end with us,
but to have our healthy progeny, intelligent progeny is also our responsibility. Every fourth generation, there will be change in the genetic code. If we change our habits, then definitely our children will change the habit. And then definitely the habits will go on deducting, and whatever the treasure of tradition, culture, and this science we have, we will lose it. It is not only the science of what that called as a curing disease, but making from the pickle, preservation of food in the kitchen. Everything is having a science. So I am coming with the conclusion: Dharmartha Kama Mokshana Arogyam Moolam Uttamam. If we want to achieve dharma, artha, kama, and then moksha, then very important is our health. If we are healthy, then we are what they call as able to achieve this all four what they call as karanas. So Ayurveda is a comprehensive science of a life that emphasizes both discipline and technical knowledge for maintaining health. The human body, being Panchabhotika, is constantly undergoes kshaya. To sustain a life, this loss must be replaced by through proper ahara and aushadha. The balance of dosha, dhatu, and mala plays a crucial role in maintaining the structural and functional integrity of a body. Principles like dinacharya and rutucharya guide us to live in a harmony with the daily and seasonal changes, thereby preventing diseases. The state, as stated in Charaka Samhita, swasthasya swastha rakshanam, aturasya vikara prashamanam. Ayurveda aims not only to cure the disease but also preserve and promote a health. Slide change. So this is my takeaway message. Balance of dosha, dhatu, and mala is the key of a healthy life. Our body undergoes continuous kshaya, hence daily nourishment through proper ahara is essential. Dinacharya and rutucharya are practical tools to maintain the health and prevent diseases. And lastly, Ayurveda focuses more on prevention than cure. Next slide. Thank you. I thank organizing committee and the Kulti College for this great opportunity. Really thank you. So here I am ending. Any questions? Thank you, ma'am. Please. Ma'am, it was really good. Thank you, ma'am. We all enjoyed it. Thank you. Do Yes, you have any Thank question? Anyone? Sir? Namaskara. Arya Namaskara. Yeah, may I ask one question? Hello. Ma'am, your speaker is mute, ma'am. No, it is. Am I audible now? Yes, yes. yes. Ma'am, you are audible, but can you post your question in a chat box? Yeah, Chat box sure. is Sure. Yeah. So I can read and yeah, I can try to answer if I can. Yes. Thank you. How to tackle the seasonal changes with the daily routine? Okay. Ma'am, actually, seasonal changes, every season is having its own Panchamahabhutika constitution. So these seasonal changes, actually, we are blessed, like our elder peoples already did this. So if we are following whatever our elders have done, some rules like abhi thanda मौसम शुरू हो गया,
तो हमको जैसे कि अभी गुजरात में होता है तो अड़ादिया बना दिया जाता है, या फिर अगर आप अलग अलग स्टेट से हो तो अलग अलग स्टेट्स में कुजिन्स चेंज हो जाते हैं। हर 2 महीने में हमारे कुजिन्स चेंज हो जाते हैं। अगर आपके घर में दादी है तो आप पूछ सकते हैं कि जैसे कि एक पर्टिकुलर हर सीजन के शुरुआत में एक पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो उस फेस्टिवल के साथ हमारा खाना चेंज होना चाहिए। तो actually ma'am, I shall give my phone number if you are interested. We can discuss, actually we can put a seasonal session with the seasonal changes, because every season there are 6 seasons. So with the seasons we have to discuss, and even we can do Tadvit Sambhasha with that. It is a very beautiful. We should go with that, so that our youngsters, our young generation should understand that this whatever the fast food they are going with once a while is okay, but they are actually changing their lifestyle and going with the what they call as a more diseases. जैसे कि 40वें साल में हार्ट अटैक आना is very bad thing. स्ट्रेस, जैसे कि हमारे ट्रेडिशंस हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रेस डेफिनेटली भी हमारे स्ट्रेस तो पहले से है लाइफ में, लेकिन उसको बेयर करने की जो शक्ति है वो अब कम हो रही है। वो क्यों कम हो रही है? क्योंकि हम जो हमारे जो हर एक कास्ट में या हर एक रिलीजन में या फिर हर एक जगह में उनका अपना एक स्टाइल होता है लाइफस्टाइल लीड करने का, हम वो छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो मानसिक या शारीरिक जो रोग है वो बहुत हो रहे हैं। So, ma'am, I can send my phone number in a chat box. You can directly WhatsApp me, so I can clear every season changes for you. Just I am sending my number 7623424467. Yes. Please repeat it, ma'am. I just sent my phone number in the chat box, ma'am. You can just copy it. Yeah. Okay. Yes, there was a. Ma'am, I have done. Yes, is there any mention of a mental health and happiness in Ayurveda? If yes, then how we can overcome to tension and anxiety issues? Very beautiful question, which is a need of a time. Like people are going with the anxiety, and we can't tell it as a tension because see, being a human, we have a greed in our what that call as. जब भगवान जी ने बनाया तो लोभ डाल के बनाया, कुछ लोगों को कूट कूट के होता है, कुछ लोगों को कम होता है, लेकिन थिंग इज जब ग्रीड होता है तो डेफिनेटली इंसान ज्यादा पाने की कोशिश में टेंशन तो लेना ही उसका वो कर्म हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि एंजाइटी जो है वो हम डील कर सकते हैं। Happiness, see, happiness is not going with someone else. Like happiness is lies within us. If you are satisfied with your own work, then definitely you are happy. जब आप रात को सोते हैं, सोने से पहले एक छोटा सा एनालिसिस होता है कि यार आज जो हमने किया सही किया या गलत किया। अगर आपको लगता है कि आपने सही किया तो आप समाधान से सो जाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कम पड़ा मैंने गलत किया तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आती है। तो एक्चुअली ये जो चीजें होती है ये हमारे पुरखों ने हमारे लाइफस्टाइल में डाली है, लेकिन आजकल के जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है या फिर आप व्हाट्सएप है, जो भी है वो हम इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम जो जैसे कि अभी दिया लगाना है, शाम को हम दिया लगाते थे, अब लोग दिया लगाना भूल गए हैं। वो दैट इज नॉट वी ऑर्थोडॉक्सी नहीं है, उसके पीछे हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। एक हम रूटीन बनाते हैं, उसकी वजह से हमारा जो ध्यान होता है वो इधर उधर नहीं भटकता है। शाम को 6 बजे हमको दिया लगाना है तो हम बाय डिफॉल्ट हम भगवान जी के पास या जहां भी हमारा जो जिस भी आप धर्म के हो वहां पे आप जाते हो वो करते हो। तो वो जो शाम का स्पेशली जो क्यों शाम को ही दिया लगाना हमको बोला है, क्योंकि वो जो संध्या काल होता है उस टाइम पे हमारी मनस्थिति जो होती है वो बहुत वीक होती है। तो वो टाइम पे अगर हम कहीं स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो गए हैं तो हमारी मनस्थिति जो रात काल में है वो स्ट्रांग रहती है। इसलिए हमको संध्या काल में ही दिया लगाना प्रिसाइजली बोला गया है।
डेफिनेटली रात होती है, दिया लगाना होता है, वो सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन जब हम दिया लगा के कुछ हम इन्वॉल्व होते हैं, सी प्रेयर इज अ टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट, स्पिरिचुअलिटी कहिए, ऑर्थोडॉक्सी कहिए, ये अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है, लेकिन ये जो हमारी छोटी छोटी जो आदतें हमारे बड़ों ने हमारे इसमें डाली है, अगर हम उसको फॉलो करते रहेंगे तो शायद हम एंजाइटी और टेंशन से डील कर सकते हैं। आपके लाइफ में एंजाइटी टेंशन ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन डील जरूर कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठते हैं, आजकल उठते ही भगवान जी का नाम तो कोई नहीं लेता है, पहला होता है कि मोबाइल देखो, एक तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन देखो। कभी तो मैं भी करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि एक बार भगवान जी का नाम लो, नहाते टाइम पे तो कोई गंगे यमुने चकरने का किसको टाइम ही नहीं होता है, लेकिन जब हम नहाते टाइम पे गंगा मैया को याद करते हैं तो शायद जब पानी सर से नीचे जाता है तो हमारे जो न्यूरॉन्स है वो जो है ना, साइंटिफिक रीजन है जिसलिए हमको हमारे ट्रेडिशन में कभी भी खड़े होके नहाना बोला ही नहीं है, लेकिन आजकल तो सब शावर लेते हैं। सो मैडम जो जिन्होंने भी डाला है, हमारे जो छोटे लाइफस्टाइल है वो हम भूल चुके हैं। बैठ के नहाना क्यों होता है? ताकि हमारे पेट को जो है कम टेम्परेचर मिले। अभी खड़े रह के आप नहाएंगे तो हर बॉडी पे सेम टेम्परेचर का पानी आएगा, सही है? पेट को कम टेम्परेचर का पानी चाहिए होता है। जब हम बैठ के नहाते हैं तो हमारी जो नीज है वो पेट के ऊपर आती है, इसीलिए तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे ना तो शायद हम एंजाइटी से डील कर पाए। यस, Thank you, ma'am. Thank you so much. I really enjoyed your lecture starting Yes. from the very beginning. Thank you so much. यस, थैंक यू। Anyone? Okay. I'm asking like any question? Hello, ma'am. Madam, it would be great if you can later on share what are the foods that can be consumed in different seasons, as you already mentioned. We would Sure, not want sure. to flood your phone number, though you generously gave it to us. So if you can share it with Ms. Dr. Shubhankar, we would be very happy to get Yes, it. ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Namaste, Good ma'am. evening. I'm calling from Hyderabad. I don't have a question as such, but when you mentioned that there is specific time to follow the Ritucharya or Dinacharya, we follow what is called as Chaturmas, Yes, madam. where we don't eat onions and brinjal especially, Yes. to help our body build the immune system depending on the Ritu. Yes. So, and as you said, people are forgetting it nowadays, and that makes us causing lifestyle diseases, given with the sedentary lifestyle that we lead, or diya jalana, diya bati karna, like Ekadashi fasting. Yes. So people are really forgetting this, especially the next generation. Exactly. Yeah, and thank you so much, ma'am, for all your wonderful insights and informative session, ma'am. Thank you, organizers as well. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Namaste, madam. One question. Namaskar. Yeah, hello, madam. Tell me. Ji, ma'am, is there any specific rules of having water? Pardon me, ma'am. Is there any specific rule of having water? Definitely, madam. There is a rule of having the water. Acharyas explain in Ahara Varga, Jala Varga, Acharya explains. So Acharya explain how many types of jalas are there. Even a rule of having a hot water and why not to consume a cold water and how to consume water. Like if you want to gain the weight, then you have to drink the water at the last of a food. And if you want to reduce the weight, then you have to drink the water before the food. This is the rule actually our acharyas tell, and there is a reason behind it.
And even with the hot water, the boiling temperature, we can treat the diseases. So water, definitely rules are there to drink the water. So And how much, generally, and no, how no, much water regularly should we take in a day? That called as a rule to drink the water, because whenever you are thirsty, your body is asking for a water, then drink it. But specifically when you are diseased, then or you want to reduce the weight, or you want to increase the weight, or you are diseased, then there are the rules for the water. Otherwise it's okay, you can drink how much your body want, because it is a rule. I am against of a dietitian, what they tell, like eat a 50 gram of paneer, eat this much of sugar. No, it is not like that. If your body is, when you feel to eat, when your body is having a lacuna, ठीक है, जब आपको कफ दोष की जरूरत है तो आपको मीठा खाने का फील होता है, जब आयरन के डिफिशियंसी है तो आपको मिट्टी का स्मेल अच्छा लगता है। इसका मतलब आपका बॉडी आपको कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो खाओ। In a day, ma'am, how much we need? Is there any rule? Pardon me, ma'am? In a day, how much water should we take? Is there any rule in a day? Yes, madam. Actually, in Ayurveda, they tell that like there is no such rule. Is not explained in Ayurveda. Like 4 लीटर ही पीना है, 2 लीटर ही पीना है, ऐसा कहीं नहीं रूल है। लेकिन अगर आपको डिहाइड्रेट हो रहा है and you are satisfied, तृप्ति plays important role. ठीक है, अगर आप ज्यादा पानी पियोगे मैडम तो आप वोमिट कर ही दोगे, आपका बॉडी कुछ भी एक्सेस एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से आप सोचोगे तो वो बोलते हैं कि आप 2.5 लीटर पियो, आपके हाइट और वेट के हिसाब से पानी का बैलेंस मेंटेन करने का वो बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में है तृप्ति प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप ज्यादा पानी पियोगे 2 चीजें होगी, एक तो आपका अग्नि कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी, या फिर आप वोमिट कर दोगे। तो आप जितना सेटिस्फैक्टरली पी सकते हो, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप उतना पानी पी सकते हो। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Namaste, madam. In Ayurveda these days, the medicines are coming as tablets or capsules. Earlier, they used to be herbal mixtures and concoctions. So, are they equally effective as the original ones? Sir, can you repeat it? Ayurveda medicines. Yes. So Ayurveda medicines these days are coming in form of tablets and capsules. Yes. Earlier, they used to be either like herbal mixtures or they used to be more raw. So are these tablets and all equally effective as the original herbs? Means you are telling like should we take a tablets instead of herbs? No. I'm saying in Ayurveda, if you go to an Ayurvedic doctor these days, they are giving Ayurveda medicines only, but in the form of tablets and capsules. Yes. Are they effective? It depends, sir. Actually, I am an Ayurveda doctor. So there are, demand and supply plays a very important role. Okay. So what happened is earlier time medicines were given in the form of basic preparations like kashaya, like churnas, or like in the form of a paste. Okay. So what happened is now for a conveniency, now अभी मैं आपको medicines दे रही हूँ और वो शाम तक खराब हो जाएगा, तो उसके हिसाब से, और हमारे इसमें tablets वो भी बताई गई है, तो tablets और capsules ये सब effective है, but वेरी इंपॉर्टेंट इज कि उसमें वो जो मेडिसिन होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो जो आप फार्मेसी आप एक्ट कर रहे हो, कौन से कंपनी का मेडिसिन आप एक्ट कर रहे हो, वो उस पे जाता है। अगर वो दावा करते हैं कि उन्होंने जेन्युइन ड्रग उसमें डाला है तो डेफिनेटली वो इफेक्टिव होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी ऐसा है कि जो भी अभी आप कुछ लोग 1 महीने का मेडिसिन देना होता है, कुछ लोगों को कन्वीनियंस ही नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को हम मेरे क्लिनिक में आके आप सुबह शाम को आके मेडिसिन खा के जाओ ऐसा बोलेंगे तो पेशेंट को तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए
medicines or capsules are effective. Understood. Dhanyawad, madam. Thank you. Thank you. Ma'am, excuse me. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening. Before you were talking about like to eat the food whatever you feel like because the body is asking, you said, no, ma'am. Yes, ma'am. So I wanted to ask, okay, if I am a disciplined person, then it's okay because the body is asking me to eat that food because something is lacking in my body. But Definitely. if the emotional and psychological effects are there in a person who may not be aware of what is going on psychologically in his body or in her body, this emotional effect also may cause negative effect on consuming the food. Do you agree with my opinion? Yes, ma'am. I agree with your opinion because definitely the statement what I have given is if a person I was telling about only about the physical thing, but definitely if a psychological imbalance is involved, then this rule is not applicable. बिकॉज अगर मुझे एंजाइटी है और मेरे सामने कुछ भी रखा है तो मैं खाते जाऊंगी क्योंकि मेरा मनस और मेरा शरीर दोनों एक साथ नहीं है. तो जब मेरा मनस और शरीर आई एम मेंटली फिट but I am physically not fit, then this whatever I told is agreeable. But what you told, definitely I agree with your opinion, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Because I wanted to just make clear for Yes, everyone madam. also Because, that is what very happens important. is, though your Agni is strong, but if the patient is of a depression, then अगर खाना मन है तो भी खाने का शरीर इच्छा कर रहा है, लेकिन मन अगर इच्छा नहीं कर रहा है तो वो पर्सन खाना खाएगा ही नहीं. तो ये जो रूल है वो मन और शरीर जब एक साथ हो तभी ही वो काम करता है, नहीं तो नहीं करेगा. हाँ, वही डिसिप्लिन मैनर में है तो करेगा, नहीं है तो yeah. If it is upset or something problems or if any sadness in the body or something like that, in the mind, and in that case it is not applicable. Yes. Okay, thank you. Thank you. Ma'am, what does Ayurveda says about consuming curd? दही के बारे में क्या कहते हैं आयुर्वेद? सबको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? Beautiful question, madam. Very beautiful question. And if the audience is hearing this concept, then I will tell you the concept of called as a okasatmya. Okay, I belongs to Brahmin community, and from my age of 5th month, I am consuming a curd. Okay, so curd is morning, afternoon, night, in a midnight. It is like curd is for me is like a everything. Okay, so for me it is a okasatmya. Whenever you give a curd, it won't affect me anything because my body is adjusted with that curd. The rule of the curd is see. Our acharyas tells that we have told you a concept, but you have to analyze it. Fine. So there is a tricky thinking is the rule of a curds is for those people who are not habituated with the curd. Okay. Like the person who consumes a fish, vegetarians are. If fish and curd you eat, then it becomes a toxic. Fine. So those persons will not eat curd. They don't eat a curd whenever they eat a fish. Okay, like that. Not eating the curd at a night. This is the question that always, even my patient asks that, ma'am, should I eat curd at a night? Then I tell them, okay, you can eat, but thing is that you have to little bit churn it. Because the patient is having some pathological condition. But for a healthy person, if you have a habit of eating the curd since long time, then nothing will happen to you. I am taking a surety. Okay, ma'am. Okay. Yes. But the people who don't eat a curds and suddenly they eat a curds and they are diseased and they eat a curds at the night, then definitely for them kapha vardhana will be there or skin allergies will be there. Definitely.
Okay, ma'am. Thank you so much. Yes. नमस्कारः महोदय द्वितीयपुटे दर्शितमासीत् शीर्यते अनेन इति शरीरमिति Yes, sir. क्षीयते अनेन शरीरमिति दर्शितमासीत् किं क्षीयते Sir? किं क्षीयते मैम उन्होंने पूछ रहे हैं जो उसमें इटियोमोलॉजी में जो दिया गया था क्षीयते अनेन इति शरीरम और शीर्यते अनेन इति शरीरम, उनमें से क्या क्षय होता है वो पूछ रहे हैं. Sir, very beautiful question, sir. I am obliged to give the answer for this. Is क्षीयते और शीर्यते दोनों सिनोनिमस है. मैं संस्कृत की उतनी परिचयात्मक नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, किम शीर्यते और किम क्षीयते is a very beautiful question. Kim is a time, kala. Why means kala. So our body is like जो बना है, हमारे बॉडी में जो धातु बने हैं उनका काल है रस से लेके शुक्र तक होने के लिए 30 दिन होता है. जो 30 दिन होता है, तो एक बार वो बन गया तो 30 दिन के बाद में अगर बनना बंद हो गया तो फिर कम तो होगा ही. तो इसलिए फिर से हमको शुरू करना है. जो कम हुआ है उसको फिर से शुरू करना है, तो फिर से खाओ रस धातु को बनाओ, रस रक्त को बनाएगा. ऐसे करते करते हमारा जो है 30 दिन का वो जो वैलिडेशन है, हम तक वहां पहुंच जाएंगे. ठीक है. उसमें एक्चुअली बहुत सारे तद्वित संभाषण हुए हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है आचार्यों के, लेकिन एज अ आयुर्वेदा पर्सन हमें एक कंक्लूसिव सेंटेंस पे हमें रखा गया है कि रस से लेके शुक्र तक बॉडी में जो धातु फॉर्म होते हैं उसको लगता है 30 दिन. तो 30 दिन अगर एक फॉर्म हो गया तो हम तो रोज काम करते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारा हर एक क्या बोलते हैं सेल जो है वो काम करता है. अगर काम करता है तो डेफिनेटली क्षीण तो होगा ही. तो एक तो है काल, तो उसके हिसाब से भी वो क्षीण होगा. तो इसीलिए वो शीर्यते और क्षीयते अनेन इति शारीरम जो सुश्रुताचार्य ने बोला है, वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है. अच्छा. मैम उसमें एक चीज और related to this. शीर्यते इति शरीरम, शीर्यते अनेन इति शारीरम भी बोला जाता है सर. और कहीं टीका में मैंने पढ़ा था कि क्षीयते अनेन इति शारीरम. मुझे टीका का याद नहीं है कि किसने टीका किया था, परंतु तो मैंने वो लिख दिया. बिफोर जीरियते दैट इज कॉल्ड जीरियाटिक. नहीं आएगा सर, या तो शीर्यते आएगा या फिर क्षीयते आएगा. आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने लिखा आयुर्वेद दर्शनम में जीरियते शीर्यते इति शरीरम, आयुर्वेद दर्शन बाय डॉक्टर पी.बी. शर्मा. जी सर, सही है सर. परन्तु यदा अनेन इति शब्दप्रयोगः तत्र वर्तते, अनेन करणं भवति. नाम शरीरम् इति करणेन किं क्षीयते? सर अगर गलती होगी तो क्षमा धातुनाम कीजिए. एक्चुअली आई थिंक सर धातु क्षीयते, पित्त क्षीयते, कफ क्षीयते, दोषक क्षीयते, पंचभौतिक शरीर इति क्षीयते. यस राज सर, राज जी नमस्कार. नमस्कार. उन्हें इसमें शीर्यते शरीर है. धन्यवाद. ठीक है. नहीं शीर्यते इति शरीरम, शीर्यते इति शारीरम. शरीरम. वही तो मैंने बोला सर, मैं संस्कृत की अभ्यर्थी नहीं हूँ, तो मेरे से अगर चूक हो गई हो तो क्षमा. मैडम आप ठीक है अपनी जगह. नहीं, आपसे गलती हुई है ये बात नहीं है. लोगों को समझाने के लिए ये प्रयास हो रहा है, बस इतना ही है. आपने जो बताया है उसी का विश्लेषण हो रहा है, बस इतना ही है. जी सर. राज्य सर इसमें किम शीर्यते इति भवता पृष्टम. यस सर. इदम माने यह जो 5 भौतिक जो शरीर है, अर्थात 5 भूतों का जो संघात है वही शरीर है,
क्योंकि ये सब तो Yes. द्रव्य विज्ञान ग्रंथ में लिखा हुआ है। और ये जो इस शरीर का क्या शीर्यमान कौन होता है, माने ये जो पांच भौतिक अनुकण है, हर एक क्षण में वो शीर्यमान होता है। उसके Yes, sir. बाद दूसरा क्षण में उसकी वृद्धि होती है, फिर क्षीयमान है, फिर वृद्धि होती है। इसलिए दो नाम हैं, आपका स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। एक तो देह शब्द का पाणिनि के अनुसार दीह उपचय अपचयार्थ, माने वृद्धि होती है, क्षय होता है, वृद्धि क्षय। इसका मतलब है आदमी हमारा देवव्रत पंडा की तरह अगर मोटा है, ये नहीं समझना है ये तो मोटा है। मोटा का मतलब है आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ है, ये नहीं है। हेल्थी अलग है, माने जो स्वास्थ्यम अलग है, बल अलग है। स्ट्रेंथ एंड हेल्थी डिफर होता है। मोटापन जब होता है वह एक दोष है। वहां यद्यपि जो अनपेक्षित जो धातु है वह उसका वृद्धि है, जो मल के रूप में जो है माना जाता है उसकी वृद्धि होती है, इसलिए वो मोटापन है। इसलिए शीर्यमान कौन है, माने जो पंचभूतात्मक जो शरीर है, पंचभूतों का जो ये अणु कारणवादी ही है आयुर्वेद वाले। इसलिए एक एक अणु तो वहां पर तो क्षीयमान होते हैं हर एक क्षण में। इसी चीज को मैडम के द्वारा ये बताया गया है। काल है, काल को लेकर उन्होंने बताया है, बस यही है। ठीक है, तो राज सर। जी 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 जी। हाँ गुरुजी पहले बताया था ना, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। यस तो हाँ, तो अभी दोषम क्षीर्यते, धातु क्षीर्यते, मलम क्षीर्यते, तो वही, ये वही। तीनों नष्ट हो गया तो शरीरम। ऐसा तत्र सम्भ्रमः अनेन इति शब्देन तत्र सम्भ्रमः अभवत्। अस्तु नाम, मैडम आई हैव अनदर क्वेश्चन सर एक्चुअली। अच्छा लगा एक्चुअली, आज कुछ नया सुनने को मिला। मतलब हमें तो सिर्फ ये बोला गया था कि काल से होता है, लेकिन ये क्षण से, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद। मैम अनदर क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस है, मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। Yes. जी मैडम, so I've heard lots of people saying that fruits. Yeah, many people having different, varied opinions on the consumption of fruits. What is the proper time to consume fruits? That is one thing. And if you're eating fruits, during the lunch or food time, basically, is it advisable to eat fruits before you consume your rice or chapati or the regular staple food, or after it? Sir, actually, I can't listen your voice as here lot of disturbances are there. So, can you type the question so can I answer it? Sorry. मैम, उनका प्रश्न ये है कि जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स को खाने का समय क्या है? खाने के पहले खाना है या खाने के बाद में खाना है? किस तरह का खाना चाहिए? वही उनका प्रश्न है। यस सर, एक्चुअली सर फ्रूट्स जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा फ्रूट है। जैसे कि इक्शु जो है वो हम खाना खाने के बाद खाते हैं,
जैक फ्रूट जो है वो खाना खाने से पहले खाते हैं। तो हर फ्रूट का अपना एक क्वालिटी होता है, उसका पचन करने का, हमारा बॉडी का उसको पचाने का एक तरीका होता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि एवरी फ्रूट वी कैन हैव फॉर फ्रूट, और हर फल को हमें खाना खाने के बाद खाना है, ऐसे नहीं कह सकते। केले को हम खाना खाने के बाद खाते हैं, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि खाली पेट केला नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रूल, मतलब हर फल के हिसाब से रूल चेंज होगा। कुछ फल है जो हम कभी भी खा सकते हैं। द्राक्ष को हम खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद अगर हम द्राक्ष को खाएंगे तो उसकी वजह से हमारे शरीर में पचन भी होगा और हमें अच्छे से नींद भी आएगी। तो द्राक्ष को हमको खाना खाने के बाद मतलब खाने के लिए बोला जाता है। लेकिन जो जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट को कहा जाता है कि खाना खाने से पहले, कटहल जो आप बोलते हैं, तो उसको हम खाना खाने से पहले खाना चाहिए, क्योंकि उसका जो पचन होता है वो बहुत हेवी होता है। अब जैक फ्रूट में दो होते हैं, कच्चा और पक्का। तो मैं बात कर रही हूँ पके कटहल की। कच्चा कटहल तो हम वैसे ही सब्जी बना लेते हैं, लेकिन पका कटहल जो होता है वो पचने में बहुत भारी होता है, इसलिए हमें उसको खाना खाने से पहले खाना चाहिए। अब आते हैं इक्षु। इक्षु का एक्चुअली, इक्षु या फिर हम जो गन्ना बोलते हैं, अगर हम खाना खाने से पहले या खाएंगे तो पहला तो वो पेट भर देगा, क्योंकि वो लिक्विड होता है, तो वो हमारा पेट भर देगा, तो हम तो खाना खा ही नहीं पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम इक्षु खाते हैं तो वो अननोइंगली हमारे जीवा पे या हमारे होठों पे वो घाव कर देता है, तो उसकी वजह से हम खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए इक्षु को बाद में कहा गया है। लेकिन ऐसे कहीं भी मतलब ऐसे नहीं बोला है कि इस फल को अब खाना चाहिए, इस फल को तब खाना चाहिए। लेकिन अपने अनुभव के हिसाब से कुछ लोग, आचार्य या हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि ये फल अब खाना चाहिए। तो वहाँ ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि सब फल जो है खाना खाने से पहले खाना चाहिए, खाना खाने के बाद खाना चाहिए, नहीं। ये अपने अपने जो कैटेगरी के फल होते हैं, मीठे कैटेगरी के और खट्टे कैटेगरी के जो फल होते हैं, खट्टे होते हैं, एसिडिक होते हैं थोड़ा नेचर में, तो जो अगर पहले खा लिए तो एसिडिक नेचर वाले फ्रूट्स जो है वो खुद से रिएक्ट होंगे ना। खाने ही नहीं चाहिए। मैम जनरली एक आइडिया है ना कि सुबह ताजे फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, शाम गुनगुना दूध पियो, वैद न आवे पास। यस सर। अच्छा, दूध से रात को दूध पी सकते हैं क्या मैडम? यू सर, आई एग्री विथ यू। Can we have milk after sunset? Sir? Can we have milk after sunset? Milk after Sunset. sir? Yes शाम sir, को you can रात को ले सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं आप? You can have sir. दूध का रात को ही सेवन करना है, ये तो बताया हुआ है। दिन में दूध निषिद्ध है। हाँ जी सर। हाँ, दिन में दूध निषिद्ध है, दिन में दूध पीना निषिद्ध है, वर्जित है आपके आयुर्वेद के हिसाब से। और दही, रात में दही पीना वो निषिद्ध है। हमारे बनारसी दही तो चलेगा, वो अलग चीज है, सत्य प्रकाश पाठक। और क्योंकि वो बनारसी है। और ये सर, अगर आप दही हमें खाना छोड़ो बोलेंगे ना सर, हम तो आधे ही हो जाएंगे। नहीं, इसीलिए माने जो पूर्णिमा मैडम कुछ लोग आपसे पूछ रहे थे, हम लोग कौन कौन माने पदार्थ खा सकते हैं, किस समय खा सकते हैं, जैसे एक टेबल बना करके भेजें करके। वस्तुतः उन लोगों का ये ध्यान होना चाहिए, आयुर्वेद का जो आहार का जो नियम है उसका अगर फॉलो करना चाहें तो तभी संभव है। हमारी जो दिनचर्या उसके अनुसार होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर। हाँ, नंबर 1 दिनचर्या का मतलब है सिर्फ डेली एक्टिविटीज मात्र नहीं है। हमारा जो परिधान है, हमारा जो परिधान का मतलब है वस्त्र है, हर एक ऋतु के अनुकूल वस्त्र का उसमें बताया हुआ है, उसका उपदेश है। उसके अनुसार हैदराबाद में जो जैसे पहनते हैं वैसे ही हिमाचल में पहनेंगे,
आज ऐसा नहीं है। आज पूरा का पूरा ये जो टी शर्ट वाले हम लोग बन गए हैं, वो विदेशी बन गए हैं। इसलिए हमारे वो उसका हमारा स्वास्थ्य कारक में परिधान एक अंग होता है, दिनचर्या में उसका एक मुख्य अंग होता है। इतना ही नहीं है, स्नान का जैसे मैडम तो उसका भी उल्लेख की है। स्नान केवल स्नान का मतलब है जो शवर बात में जो वो बिल्कुल वर्जित है। कौन सा जल है वैसा किसी का प्रश्न था। स्वाभाविक जो नेचुरल जो वाटर है वही स्नान के लिए उसको तो लिया हुआ है। आज हम क्या करेंगे नहीं करेंगे ये अपनी ये बुद्धिमत्ता का ये प्रश्न है, लेकिन आज उसका समाधान नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, और स्नान स्नान मात्र नहीं है। जैसे नेक्स्ट आहार का जब हम जाएंगे, आहार में तो कैसे कौन सा पदार्थ खाना है उसी में हमारा प्यास भूख लगती है, लेकिन कैसे खाना है, कितने टाइम में खाना है। तस्मात् द्विहि अन्नः मनुष्याः मनुष्य मानव कृत मानव के लिए 2 बार बताया हुआ है, पशुओं के लिए 3 बार बताया हुआ। ये आयुर्वेद का है पशुओं के लिए, और वो भी पशु लोग हैं खड़े होकर ही उसको खाएंगे, जबकि हम लोग वही वो काम करते हैं। फास्ट फूड है उनको उनके लिए, हम उस फास्ट फूड के लिए हम तो तरसते हैं। कभी भी जमीन पर बैठ करके हम खाते नहीं हैं, जमीन पर बैठ करके ही खाना है। मैडम डॉक्टर है, नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे तो कल से फीस नहीं सर, नहीं नहीं कल से फीस नहीं मिलेगा। सर ऐसा नहीं है सर, हम तो अभी बच्चे हैं सर। एक्चुअली हमें जो हमारे गुरु ने बताया है, हमारे जो दादा दादियों ने बताया है, और जो हम एनालाइज, सर ये डॉक्टर की डिग्री आने से ज्ञान नहीं बढ़ता है। आज भी मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों के साथ बातचीत करते समय तो उन लोगों को वो बताते हैं पानी पीना है तो बैठ करके पियो, और खाना है तो बैठ करके खाया करो। मोदी जी का माम है तो ये बंगाल में हो रहा है, ये मोदी जी का मैं भक्त नहीं हूँ, जो और लोगों का और कुछ नहीं है। इसका मतलब है ये सब जो दिनचर्या है, कुछ आयुर्वेद में जो बताया हुआ है वो आज भी प्रासंगिक है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कोई कारण बता करके उससे हम दूर रहना चाहते हैं, सिर्फ दवाई के लिए नहीं है। मैडम का पहला भाषण शरीर को लेकर, अंतिम वाक्य मैडम का क्या था? धर्मार्थ मूल मोक्षाण आरोग्यम मूलम उच्यते। ये मैडम का वाक्य अंतिम, उस पर किसी का क्वेश्चन नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। हाँ, मूलम उत्तमम करके मैडम का अंतिम वाक्य था, उस पर किसी का प्रश्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? नहीं, वो मैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद है लाइफस्टाइल का वो तो प्रस्तुत करता है, इतना मात्र नहीं है। लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए आप धर्मिष्ठ होना चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद शास्त्र है। ये नहीं है कि कौन सा हम टैबलेट लें, कौन सा कषाय लें, कौन सा रसायन लें, उसके लिए आयुर्वेद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए जो बताया वहां पर भूत विद्या ग्रह विद्या के रूप में ये जो कल का जो हुआ था, जो मनोवैज्ञानिक जो पद्धति है, क्यों उसमें बताया हुआ है।
क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल जो स्टडी अगर इसका अगर नहीं होता, आप जो भी आप खाएंगे, माने जो सेब है, वहां पर सेब तो हमेशा खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका सेब तो हमेशा नहीं खा, क्योंकि देश के हिसाब से, देश का हिसाब से, ऋतु का हिसाब से, तो फल का भी कुछ महत्व होता है। फल का भी वो जो फल है वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। वो कहाँ से, कब, जिस जगह से उत्पन्न फल है हमें लेना है, वो बताया हुआ है उनके आयुर्वेद में। ये बने कई चीजें, ये सब तो एक दिन में, एक घंटे में पूरा का पूरा हम नहीं हो अनुभव ले पाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। 5,000 साल के पहले जो उपदेश है, हमें भी 5,000 साल चाहिए इसका ग्रहण करने के लिए, क्योंकि उतना सूक्ष्म रहस्य है इसमें। ठीक है। सर्वाणि तो आप बताइए। धर्म साधनाय भवति आचार्य। हाँ बताइए। सर्वाणि शास्त्राणि तु धर्मसाधनाय एव भवन्ति। हाँ सत्यं सत्यं सत्यं। तर्हि आयुर्वेदस्य कुत्र उपयोगः, स एव किल प्रश्नः। न न, स एव न, आयुर्वेदस्य तु यदा नाम तत्र प्रश्नः अस्ति, शास्त्रस्य यः कोऽपि यं किमपि शास्त्रं वा अस्तु, शास्त्रस्य प्रयोजनं धर्मसाधनं वा उत मोक्षप्राप्ति वा? नहीं, हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा, हिंदी में बताता हूँ, मैंने सभी लोग का तो होगा। मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई भी शास्त्र हो, अगर काम शास्त्र भी है, मैंने पहला दिन भी बताया था, काम शास्त्र भी हो या पाक शास्त्र भी हो, उसका लक्ष्य है मोक्ष है, उसका लक्ष्य मोक्ष है। क्योंकि या विद्या सा विमुक्त, हमारा वैल्यू ऑफ एजुकेशन, अर्थात वैल्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन इज टू गेट माने लिबर्टी। बस यही है, एक ही वाक्य, एक ही सेंटेंस है। इसलिए आयुर्वेद का उसका संबंध क्या है? आयुर्वेद विज्ञान का आप गुरुमुख से ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा अगर क्रमबद्ध से अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हम अपना जो दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऋतुमतीचर्या, इन सब के बारे में जानते हुए कैसे हमारा जो प्रैक्टिस है, जो जप ध्यान इत्यादि, ये सब तो दिया हुआ है उनके वहाँ। जो भूत विद्या के बारे में उसमें बताते समय तो ये सब दिया हुआ है। ये सब करने से आपका जो मन प्रशमन कैसे होगा, थ्रू दैट मन प्रशमन आप कैसे वो जो अल्टीमेट को कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस तभी ये जो आयुर्वेद विज्ञान है सफल होता है। सिर्फ गुरुजी, ये Madam, I have one. गुरुजी एक बड़ा अच्छा वाक्य है चरक का। ये जो त्रिफला चूर्ण है या अश्वगंधा चूर्ण है, ये सब तो 3 दिन के लिए रहेगा बस, लेकिन हमेशा के लिए हमारा हाउ डू वी गेट पीस माइंड, ये उसके लिए इस आयुर्वेद का कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके लिए हमारा जो भित्ति के तरह हमारा शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होगा तो तब हम ध्यान जपादि हम करेंगे, तब अल्टीमेट के ओर हम जा सकेंगे। बस यही उसका तात्पर्य है। चरक ने लिखा है, योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम, मोक्षे निवृत्ति ही नेह से सा योगो मोक्ष प्रवर्तक। ये सारी स्थान आयुर्वेद का ही है। ये तो है, ये पूरा का पूरा मोक्ष के लिए ही है शास्त्र। ये तो है। हाँ, ये इसने इस चीज को बड़ा अच्छा तरीके। एक्चुअली हम ये जो आयुर्वेद को ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ये तो सर सारी संहिता है सर। हमें तो डॉक्टरी पढ़ने के लिए हमें ये सब कंसाइज करके सिलेबस रूप में पढ़ाया गया है, लेकिन
लेकिन आप- ये तो संहिताएं हैं सर, अगर अथर्ववेद को हम पढ़ने लगेंगे तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वेद कंप्लीट तो नहीं होगा सर। नहीं, आयुर्वेद एंड योगा ये दोनों इस तरह का तोड़ 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 के करेंगे तभी ना आपका लोगों से तोड़ तोड़ करके आप पैसा भी ले सकते हैं। नहीं सर, आप सर ना आप अगर नहीं, अगर Good हम evening. हेल्दी रहेंगे तो डिसीज तो आएंगे ही नहीं सर। आप मेडिसिन आपका देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपका भी मन प्रसन्न नहीं है, हम जैसे माने पेशेंट का भी पेशेंस नहीं है। Good evening, madam. I have a question. Yes, madam. Like other medical systems have their own limitations. Does Yes, ma'am. Ayurveda also have limitations? Ma'am, it is like, see, we can't correlate one system with the other system. That is the first point. Second is we are having our own concept. So one should not correlate or compare Ayurveda with other system. Second thing is definitely we too have a limitations at our level. If, see, our acharyas told 100%. That 100% reaches till us. I am a Ayurveda faculty. Okay, I read PUC second year तक हमने पूरा जो है मॉडर्न पढ़ा है। हमको कहीं भी हमारे सिलेबस में संहिताएं नहीं थी। +2 तक जब तक हम आयुर्वेदा में नहीं आए थे, ना हमें किसी ने वेद के बारे में ज्ञान दिया था। जो भी ज्ञान हमको वेद का मिला है हमारे घर से, हमारे बड़ों से, उनसे मिला है। जैसे ही हमने कोर्स लिया तो हमको इन सब का नॉलेज शुरू हुआ। तो आचार्यों ने अगर 100% बोला है तो हम तक वो पहुंचते पहुंचते शायद 2 या 3%, मैं तो कहती हूँ 1% पहुंचता है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि लिमिटेशंस है तो हाँ, लेकिन अगर आचार्यों के पास से अगर पूछेंगे तो शायद उनके पास कोई तोड़ रहेगा। Thank you, madam. This is what I expected because I have a very high opinion of Ayurveda. So I was just expecting that it is not like any other medical system. It has its unique. No, madam. See, आचार्यों ने जब डिसीजेस को बोला है तो 3 तरह से बोला है, साध्य, सुख साध्य, कृच्छ साध्य एंड असाध्य। तो खुद आचार्य भी अगर किस डिसीज को असाध्य बोलते हैं, वो असाध्य मीन्स लिमिटेशन। Okay. Yes, we yes. have limitations. Yes. अगर कोई डिसीज ट्रीट नहीं हो सकता, अगर आचार्य बोल रहे हैं तो आप्तोपदेश है वो, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। आप्तोपदेश को कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाता, ऐसा मेरा मानना है। अगर तो फिर उस प्रमाण का तो कोई मूल ही नहीं रह जाएगा। Yes. Thank you. Yes, madam. आचार्यवर्य मोक्षस्तु मनस्थितिः किल, शरीरस्य कः सम्बन्धः? नहीं, शरीरम स्वस्थम भवति चेत, अगर शरीर स्वस्थ होता है तभी मन का प्रशमन होता है। मन का प्रशमन अगर होगा तभी शांत होंगे। शांत का मतलब है आप माने जो समस्त इंद्रिय, शांत और दांत 2 शब्द दिया हुआ है। शांत का मतलब है इनर जो ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करना। दांत का मतलब, दमन का मतलब है जो बाह्य इंद्रिय है उसको दमन करना। यह दोनों जिसके पास होगा वही आदमी तो जप या ध्यान या पारायण उसके द्वारा जो भी उसका लक्ष्य है, उसका लक्ष्य हम राम कृष्ण ऐसे रूप में बताएंगे तो आप वैष्णव है, ये है, वो है, ऐसा बताएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो लक्ष्य है अर्थात ज्ञान ही लक्ष्य है, उस ज्ञान का आप ये जो ज्ञान रूप जो सेल्फ है, सेल्फ एंड शेल्फ है। शेल्फ आपका शरीर है, SHELF, शेल्फ आपका शरीर है, सेल्फ आत्मा है। मैडम वही बता रही थी शुरू में, शारीरम करके, शारीर आत्मा है, शरीर शेल्फ है।
ये जो शेल्फ है इसी से जुड़ा हुआ है मन है। अगर मन शांत होता है तब इस शेल्फ के द्वारा उस सेल्फ को हम लाभ उठा सकते हैं, उसका हम देख सकते हैं। वेयर आई एम, व्हाट इज आई एम, माने मैं कौन हूं, तभी वह जो ज्ञान हमको होगा। अब तक हमारा जो ज्ञान होता है, अब तक हम लोग चलते रहते हैं। वी आर ओनली फॉर प्रमोटिंग आवर शेल्फ, नॉट सेल्फ। मैडम के पास हम जाते हैं, प्रमोटिंग फॉर आवर शेल्फ है, उसके लिए पैसा दे करके शेल्फ प्रमोटिंग करते हैं। लेकिन हम वहां जा करके बताते क्या है, आई मैं बताता हूं, लेकिन मैं टच करता है उस आत्मा का नहीं है। मैं टच करता है इस शरीर को। ना मैडम जानती है या मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस शरीर को लेकर ही, जिस शरीर को हमें छोड़ना चाहिए उसको लेकर ही हम इसी धरती में इस पद्धति के अनुसार, किस पद्धति, ये जो कल का जो व्याख्यान हुआ था मन प्रशमन उपाय, जो मन का प्रशमन का जो साधन है उसके द्वारा करेंगे तो तब तो ये जो शांति शांति वाला जो शांति है वो हमें मिलती है, वही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है कोई कानपुर रायपुर के तरह कोई एक जगह नहीं है। क्या जी राज सर, आपका प्रशमन हुआ या नहीं? अन्यथा वदिष्यामि, कालातीतः भवति सर्वेभ्यः। नहीं सत्यं, नहीं मया परिहासः न क्रियते, तथा मा चिन्तयतां, क्षमार्थी हूँ, वो बात नहीं है। माने वादे वादे जायते तत्वबोधः, कोई पूछेंगे, पूछने पर और लोगों का भी तो ज्ञान का वर्धन होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है अपार है, इसमें किसी तरह का लिमिटेशन नहीं है। यही हमारी ज्ञान परंपरा का एक विशेषता है। एक संकोच है। हरि ओम महोदय, एक प्रश्न है, थोड़ा गलती भी होगा। नहीं, आप अब कोई बात नहीं है, हमारा पूछिए। धर्म मूलम धर्म साधनमिति उक्तवान् किल महोदय। धर्म खुद का प्रयत्न है, नहीं तो समाज के लिए धर्म रहना है। समाज के लिए रहना बोले तो कौन सा चीज खाना है, मांस भक्षण करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि खुद का बोले तो हम मन प्रसन्न रहना, ऐसा रहना। समाज के लिए जीते समय कुछ समय में युद्ध भी करना चाहते हैं, युद्ध के लिए उसका मन ऐसा रहना, इसलिए मांस भक्षण करना चाहिए क्षत्रियों के लिए। हाँ ठीक, मैं प्रश्न समझ गया हूँ। हाँ ठीक है। मांस का क्यों, मैडम कहाँ है? मैडम निकल गई हैं क्या? सर मैं यही हूँ, मैंने प्रश्न सुना है। ठीक है। मैं आपसे सुनना चाहूंगी और फिर मैं विचार मेरे व्यक्त कर सकती हूँ। मेरा पहला विचार है कि क्या हमें मांस खाना उतना जरूरी है? नहीं, उनका मैं बता देता हूँ, उनका मैं समाधान देता हूँ। पवन जी, क्योंकि पवन कुमार ऐसा आ रहा है इसलिए उनका नाम पवन ही होगा शायद, है ना? हाँ जी पवन जी। हाँ ठीक है। माने मांस खाना है, मांस खाने का भी विधान आयुर्वेद में है, लेकिन किसके लिए है, उसके लिए आर यू एलिजिबल और नॉट, उसको आपको देखना है, नंबर 1। उसके बाद इतना ही नहीं है, इसको और भी एक जोड़ देता हूं, मद्यपान भी करने का दिया हुआ है। ठीक है, जो अल्कोहल है उसके द्वारा दवाई बनाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम तो उसमें बताइए और ये नहीं जो सर, नहीं मद्यपान तो
मेरा फेवरेट चैप्टर है सर, मांस मद्यपान। अगर आप सही ढंग से सर, ये सब ना मिथ्या कहा गया है कि मद्य को ऐसे ही बदनाम किया है। नहीं वही अगर वही मद्य तो सही टाइम पे पिया जाए नहीं, तो नहीं, वो तो अग्नि को वर्धन करता है। नहीं वो इसलिए मांस मद्यादि इन माने चीजों का कौन खा सकता है, कौन पी सकता है, कब खा सकता है, कब पी सकता है, ये सब बताया हुआ है। उसके लिए 100% you are not eligible as well as we are all not eligible. Okay? माने ये खाते आज का प्रसंग है, कल का प्रसंग है, ऐसा झूठ मूठ का प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये तो गलत धारणा है। ठीक है? नहीं आर्मी वाला खाते हैं, नहीं आर्मी वाला के लिए तो निषेध नहीं है। ये आर्मी वाले खाते हैं करके मैं खाऊंगे क्या? मैं तो घर में हमेशा माने जो मैडम बता रहे थे ना, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, कहाँ इसका अर्थ किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि उसी मुहूर्त में ही खड़े होकर चैटिंग एंड करते हैं, उसके बाद सोने जाता है। न सूर्य का उदय नहीं देखता है या अस्त नहीं देखता है। ऐसी हालत में उनका मद्यपान और ये जो मत्स्यपान है, मत्स्य खान है, ये सब तो हम कैसे खा सकते हैं? माने ये बिल्कुल वर्जित है। राम ने खाया है, भीम ने खाया है, ये सब तो उदाहरण है। उनकी जो ताकत है न तुम्हारे पास है या मेरे पास है, इसलिए उसका एडमिशन नहीं मिलेगा, वर्कशॉप के द्वारा नहीं मिलेगा। तुम खाओ या पियो, उससे मतलब नहीं। ठीक है? क्योंकि ये सब तो रिकॉर्ड होता है ना। महोदय, अपवाद राजमार्ग नहीं बनता। हाँ, क्या अपवाद राजमार्ग नहीं हो सकता। नहीं सर्वे नियम What do you mean by राजमार्ग? सर स्पष्ट करिए ना, ये अपवाद के राजमार्ग बिना क्या कोई बनाना चाहते नियम हैं? नहीं होता है। हाँ Okay. हाँ ठीक है, आप कंक्लूड करो। Okay. Now, I would like to warmly invite respected Dharwad Panda sir to present the summary of the session. Dharwad sir. Namaste, Sri Gurubhyo Namaha. Respected speaker Dr. Shweta Kulkarni madam, respected my Guruji Professor K. Dharanidharan, and principal of this college and the coordinator Subhankarji. Actually today it was a very nice session, and the presentation was very good and very elaborately she has touched all the points. So first he started or discussed about the Sharira, how the body has formed, and also through that she came to what is the aim of Ayurveda, Swasthasya Swasthirakshanam, evam Aturasya Vikara Prasamanam. In that she has explained about the causative factor and the preventive factor of the, she touched that. Then also she discussed about the branches of Ayurveda in details, and also madam explained about the fundamentals of Sharira, that is a dosha dhatu malamulam hi shariram, very clearly. And after that she touched the status of health, that is samadosha samagnischa samadhatu malakriyah, and also explained very nicely about that tridosha, then saptadhatu and trimala in very details, and touch in the clinical ways and in modern touch also she has given, and also has given about that very clearly or very nicely about the pitta dosha, vata dosha and kapha dosha. Also he has explained about the function of dhatus and malas, and she has touched about the dinacharya and rutucharya, why to follow the dinacharya and rutucharya is important nowadays, and she has given very clearly about of all the things.
all these points. So it was really a very excellent paper. And thank you, madam, for your very nice presentation in this session. So thanks all the organizing committee, so who has given me a chance to give this summary of this paper. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Now, finally, I would like to warmly invite respected Guruji to kindly present the concluding remarks of the session. जो नमस्सभा, ये मैडम का जो प्रेजेंटेशन है नॉट ओनली नाइस है, ये तो बिल्कुल नाइफ प्रेजेंटेशन है, क्योंकि नाइफ है, इसलिए सभी लोग उसको लेकर उसको काटना है या उसको काट करके उसको खाना है, इस तरह का सब लोगों का मने एक उत्तेजक रूप में वो था। क्योंकि उसका कारण है जो होलिस्टिक जो प्रेजेंटेशन है, एक शॉर्ट टाइम में पूरा तो इन्होंने जो प्रस्तुत किया है, वस्तुतः मैडम का जो भाषण है अभिनंदनीय है। इतना ही नहीं, उनका सार इससे हम बता सकते हैं, जो उपक्रम और उपसंहार, अगर इंट्रोडक्शन एंड जो कंक्लूजन है, इन ये दो स्टेटमेंट अगर कहीं भी भाषण में ठीक होता है, तब तो उनका पूरा भाषण है 100% तो सही हम बता सकते हैं। तो उसमें मैडम पार कर लिए हैं। तो इस तरह का हमेशा माने हमारा जो कुल्टी कॉलेज के द्वारा जब भी, और इसमें जो भागी लोग हैं अपने अपने कॉलेज से जो लोग आए हैं, वे उन लोगों का भी मेरा विनम्र निवेदन है, मैडम को ऐसा वो जो नंबर भी दे दिए हैं सबके पास, इसलिए मैडम को ऐसा कष्ट दें, उनका भाषण से हम लोग लाभान्वित तो होंगे। क्योंकि इस तरह का जो निरूपम जो प्रस्तुतिकरण है देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमारी जो हार्दिक शुभकामनाएं हैं मैडम को, और प्रतिदिन मेरे को बहुत ही गर्व होता है कुल्टी कॉलेज के ऊपर। मेरा कभी कभी माने असूया भी है, जलसी भी है। आपके जो प्रिंसिपल है प्रतिदिन माने पूर्णतः इसमें जुड़ते हुए इस आनंद का लेते हैं। संस्कृत के ऊपर उनका इतना गहरा उनका जो स्नेह है, उसको लेकर मेरा मन बहुत ही आनंदित है। और पूरा जो कुल्टी कॉलेज और उनके जो गैंग है, हमारा जो छात्र है परिमल मंडल, शुभंकर और सत्य प्रकाश पाठक, देवव्रत, और जो लोग इसमें हमारा जो छात्रगण और भी लोग कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबका मेरा शुभाशीष है। और मैडम को बार बार मेरा शुभकामनाएं हैं। आपका इस तरह का व्याख्यान हमेशा हर जगह होते रहें, इसी कामनाओं के साथ मैं विराम लेता हूँ। नमस्ते। Now we'll conclude today's session with the Shanti mantra. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinaavati Tamastuma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti. Om. नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। गुरुजी यहाँ टेम्परेचर 10 है अभी। हाँ जी सर। क्या है? मैं गुरुजी को बोल रहा तो कह रहे थे हिमाचल में अभी भी मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ, टेम्परेचर 10 है। अच्छा, Come to South India. We are having यहाँ party. 35 है सर जी, यहाँ 35-36 है हैदराबाद में।